Assalamu alaikum and good noon everyone. I don't know what will be the time when you will be having a look at this video speech, but here it's 11:45 and it's almost afternoon. As you can see the sun right above my head. As you have already gone through the topic, which is the role of parents in moral demise of their children, the role of parents in making their children liars. Before starting this video, I'm sharing an interesting thing with you, that today I am intended to record this video speech in both languages, that is English as well as Urdu. The first half of this video is in English, whereas the second half is in Urdu. The people who feel convenient to listen in English, they can listen the first half. Otherwise, if you are not feeling convenient while listening the first half, then you can go to the second half. तो दोस्तों, आज जो मेरा वीडियो पैगाम है उसका टॉपिक तो जैसा कि आप लोग पहले देख चुके हैं कि बच्चों की अखलाकी पस्ती में वालदैन का किरदार, या उनको झूठ सिखाने में वालदैन का किरदार। तो आज मैं इंग्लिश और उर्दू दोनों ज़बानों में अपना मैसेज ये वीडियो स्पीच रिकॉर्ड कर रहा हूँ। पहला हाफ़ इसका इंग्लिश में है, जबकि दूसरा हाफ़ इसका उर्दू में है। अगर आप कन्वीनियंट फील करते हैं तो इंग्लिश में सुन लीजिए, अदरवाइज़ आपके पास दूसरे हाफ़ में उर्दू का ऑप्शन मौजूद है। So friends, I'm starting with an incident. When I was in matric, I read a poem, Rebecca Mason in the parlor. Rebecca was an English baby who went into the parlor but accidentally broke something there. Now she was confused that what she should do now, whether she should tell it to her mother or not. Eventually, she decided to reveal it to her mother. She went straight away to her mother and told that I have broken something in the parlor. Now the question is, what her mother did. Did she punish her? Did she scold her? Did she snub her? Did she insult her? No, she didn't do so. Then another question. What she did then? She appreciated. Why? Why appreciation? Appreciation for breaking something in the parlor? No, appreciation for telling the truth. If something has happened in our society, do you know what would be the consequences? What would have happened? The same boy, the same girl which came to you to tell the truth would have been punished. The same girl or boy would have been penalized. The same girl or boy would have been insulted. With this statement, don't you know how precious it was? Don't you know how precious thing you had broken? Now, most important thing which I want to convey. Let me know one thing. Will the same boy or girl come to you to tell the truth again? No. Definitely he or she will never come to tell the truth again. Because he or she will think that truth hasn't worked in his or her favor. So
definitely he will go with lie, because law is working in his favor. So here we ourselves are responsible in moral demise of our kids. Another thing, often it happens at our homes that dad says to his son or daughter, go out and tell that father is not at home. And it also happens that we hand over our cell phones to our kids and ask them to speak and say that father is out, he is not at home. Aren't we responsible in moral demise of our kids? And last thing, material things can be regained. You can make material things again. But if once children have fallen morally, then it's very hard to raise them. So take great care and don't be the person who is responsible for moral demise of their kids. I hope you will agree, and I'll wait for your comments, I will wait for your response, and I will wait for your critical analysis. If you like this video, then like it, share it with others, and don't forget to subscribe my channel for more videos. Thank you. चलते हैं इस वीडियो के उर्दू हिस्से की जानिब। तो सबसे पहले मैं एक बरतानवी बच्ची का किस्सा आपके सामने सुनाता हूँ और उसकी रोशनी में फिर बात करूँगा। जब मैं मैट्रिक में था तो एक पोएम हमने पढ़ी, रबीका मैसन इन द पार्लर। एक अंग्रेज़ बच्ची अपने पार्लर में या बैठक में जाती है और वहाँ उससे कुछ चीज़ टूट जाती है। अब वो बड़ी कंफ्यूज है कि क्या किया जाए, और बिलाखिर फ़ैसला करती है कि मैं जाकर अपनी वालदा को सच सच बता देती हूँ। सीधी अपनी वालदा के पास जाती है और अपनी वालदा से ये कहती है कि मुझसे फ़लाँ चीज़ टूट गई है। अब सवाल ये पैदा होता है कि उसकी माँ ने उसके साथ क्या किया? क्या उसकी माँ ने उसको सज़ा दी? क्या उसकी माँ ने उसे डराया धमकाया? क्या उसकी माँ ने उसकी बेइज्जती की? नहीं। तो फिर क्या किया? उसकी वालदा ने उसकी हौसला अफजाई की। अब क्या सवाल ये भी पैदा होता है कि क्या वो पार्लर में कुछ चीज़ कीमती चीज़ तोड़ने की वजह से उसकी हौसला अफजाई हुई? नहीं, कतन ऐसा नहीं हुआ। उसकी वालदा ने उसकी हौसला अफजाई इसलिए की कि उसने सच बोला था। अब मेरा सवाल यहाँ ये भी है कि अगर उसी बच्ची को वहाँ स्नब कर दिया जाता, वहाँ डांट दिया जाता, वहाँ उसको सज़ा दे दी जाती, तो क्या वो बच्ची दोबारा सच बोलती? क्या वो दोबारा आके बताती? और अगर वही बच्ची हमारी सोसाइटी में होती तो ऑनेस्टली स्पीकिंग उसको सज़ा दी जा चुकी होती, उसकी बेइज्जती की जा चुकी होती, उसको डराया जा चुका होता। और इस सवाल के साथ तुम्हें नहीं पता ये कितनी कीमती चीज़ थी, तुम्हें नहीं पता कितनी महंगी हमने ख़रीद के लाई थी, तुमने ये तोड़ दी। अब इसका नुकसान क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जो बच्ची या बच्चा आपके पास सच बोलने आया, आपने इस सच की वजह से उसको डांट दी, आपने इस सच की वजह से उसको सज़ा दे दी। दूसरी दफ़ा वो आपसे सच बोलेगा, दूसरी दफ़ा वो आके आपको बताएगा वो क्यों ऐसा सच बोलेगा जो सच उसको सज़ा दिलवा रहा है। वो ऐसे झूठ का सहारा क्यों ना ले जहाँ जिसके बोलने से उसकी जान बच जाएगी। तो मेरा यहाँ पैगाम ये है कि मटेरियल थिंग्स, ये मादी चीज़ें दोबारा हासिल की जा सकती हैं, लेकिन एक दफ़ा बच्चे की अखलाकियात गिर गई तो उसको दोबारा संवारना बड़ा मुश्किल काम है। तो काइंडली आप अपने हाथों अपने बच्चे की अखलाकियात का जनाजा मत निकालिए, आप उन्हें झूठ मत सिखाइए। और फिर ये भी देखने में आया है कि वालिद साहब या वालिदा घर पर मौजूद हैं, अक्सर वालिद साहब घर पर मौजूद हैं
और وہ بچے کو باہر بھیجتے ہیں بیٹا جا کے بتا دو کہ والد صاحب گھر پر نہیں ہیں، اور پھر یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ فون ہاتھ میں پکڑا کر کہتے ہیں یہ بات کرو اور کہہ دو کہ والد صاحب فون گھر پہ رکھ کر کہیں چلے گئے ہیں۔ تو کیا ہم بچوں کو جھوٹ سکھانے کے ذمہ دار خود نہیں ہیں؟ تو یہاں میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی ان چیزوں کا خیال رکھیے۔ اور ایک چیز میں بھول گیا اس انگلش پارٹ میں کہ اگر میں اپنی بات کروں تو آئی نیور ایڈوائزڈ سچ تھنگ ٹو ادر پیپل وچ آئی ایم ناٹ ڈوئنگ۔ میں کوئی بھی ایسی چیز دوسرے لوگوں کو اس کی نصیحت نہیں کرتا جو میں خود نہیں کر رہا ہوتا۔ I'm practicing it at home and being a teacher I'm practicing it in school۔ گھر میں بھی اور اسکول میں بھی میں اس پر عمل کر رہا ہوں، اور مجھے خوشی ہے کہ میرے بچوں کو یہ پتہ ہے کہ اگر ہم سچ بول دیں گے تو سر نے کچھ نہیں کہنا۔ اور یہی وجہ ہے کہ میرے بچے مجھے آ کے کہتے ہیں سر آج ہم نے کام نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ اس لیے نہیں کیا کہ ہمارا دل نہیں کر رہا تھا۔ وہ لیم ایکسکیوزز نہیں بیان کرتے میرے سامنے کہ سر کافی لکھی تھی گھر آ گئی، کام کیا تھا بھول گیا۔ وہ کہتے ہیں سر دل نہیں کر رہا تھا نہیں کیا، فلاں جگہ گیا ہوا تھا نہیں کیا۔ اور میں ان کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں اور ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے سچ بولا، کوئی نہیں کام آج نہ کیا کل کر لیں گے۔ لیکن ہم نے ان کی اخلاقیات کو بلند کرنا ہے، انہیں سچ بولنا سکھانا ہے۔ آئی ایم ہوپ فل کہ آپ پیپل اگری کریں گے اس بات سے، اور مجھے انتظار رہے گا آپ کے کامنٹس کا، آپ کے کریٹیکل انالیسز کا، اور میں یہ بھی امید کرتا ہوں کہ مجھے سپورٹ کرنے کے لیے آپ اس ویڈیو کو لائک کریں گے، آپ اسے دوسروں کے ساتھ شیئر کریں گے، اور میرا چینل سبسکرائب کرنا نہیں بھولیں گے۔